यस सर। ओके, सो व्हाट वी हैव डन यस्टरडे, हमने क्या किया, हमने सिंपल सिंपल बेसिक्स किए कि जिससे कि हमारे जो पुरानी चीजें हैं वो रिफ्रेश हो जाएं। यस लाइक सर। हमने हमने किया कि भाई क्या क्या स्टेटमेंट प्रिंट क्या होता है, फिर हमने डाटा टाइप्स पढ़े कि आप उसको डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते, स्ट्रिंग के साथ ऐड करना पड़ेगा अगर लाइन में करना है। ओके, देन हमने फिर इफ नेस्टेड एलिफ देखा, कंडीशंस कैसे होती हैं वो देखी हमने कि नेस्टेड इफ भी देखा, एलिफ भी देखा, इफ एंड एलिफ भी देखा, इफ एंड एल्स भी देखा, इफ एंड एलिफ एल्स भी देखा। ओके, सो we have done that thing, and after that we have go for our that while and for loop. यस सर। Okay, now मैंने आपसे कहा था कि मुझे आप करके दिखाना कि जिसमें हम फर्स्ट 100 नंबर्स का 100 नंबर का उसका सम कर पाए। एडिशन एडिशन कर सकें। ओके, सो वो तो आपने नहीं किया है, चलो मैं अभी भी आप पे ही छोड़ रहा हूँ, ये मैं नहीं करवा रहा हूँ, ये आप पे ही छोड़ रहा हूँ। मैं अभी भी मैं चाहता हूँ कि आप इसको ट्राई करो, क्योंकि अगर मैंने कर दिया तो इट्स लाइक ए स्पून फीडिंग, मैं वो नहीं चाहता। ओके, ठीक है सर। मैं चाहता हूँ कि आप इसको ट्राई करो। ओके, तो फिर आप कल ये करके लाओगे ना मेरे पास फर्स्ट 100 नंबर्स के हाँ नहीं एडिशन। सर। यस ठीक सर है, डेफिनेटली इसको मैं ट्राई करूँ। ओके, नाउ से जस्ट अ मिनट। ओके, सर एक चीज पूछनी है मुझे, हम्म मतलब बेसिक नहीं है कि जैसे जैसे ये था सम ऑफ 100 नंबर्स या फिर हम हम्म हम्म जैसे कुछ भी हम्म कर रहे हैं, तो हम्म। मतलब हम कैसे मतलब जा सकते हैं कि हमें किस लूप में जाना है, मतलब देखो जैसे जैसे सबसे वाइल पहले और। देखो सबसे पहले क्या है, अगर मैं फोर लूप की बात करता हूँ, चलो मैं सिंपल फोर लूप की बात करता हूँ। ठीक है, ओके, नाउ से दिस वन। ओके, नाउ अब मैं इस फोर लूप के मुझे पता है कि ये अगर मैं इसको चलाऊं तो, और इसको सबसे पहले इसको कर देता हूँ कमेंट, और मैं इसको अगर यस सर। चलाऊं, रन करूं, तो मुझे ये 10 से लेके 49 तक दे रहा है। तो फर्स्ट यस सर। मेरे कंडीशन, मुझे 100 नंबर चाहिए, मुझे 100 नंबर चाहिए, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, इसको पहले 1 करूंगा, और इसको क्या करूंगा, 1 होगा। यस, बिकॉज इट विल नॉट टेक द मैक्सिमम। यस सो सर। अब मेरे को पता चल गया कि अब मैं इसको रन करता हूँ दोबारा। नाउ मेरे पास यस डिजिट आ सर। गए 100, 1 से लेके 100 तक। नाउ मुझे क्या करना है, मुझे कोई तरीका अपनाना है। मैं सोचूंगा कि यार जिससे कि ये 1 2 में ऐड हो जाए, और जो इन दोनों का रिजल्ट हो वो इसमें ऐड हो जाए, जो इन तीनों का रिजल्ट हो वो इसमें ऐड हो जाए। तो सबसे पहले मुझे क्या देखना पड़ा कि मैं इस 1 को मैं कौन से वेरिएबल में रखूं। यस सर। ठीक है ना, और उस वेरिएबल को मैं इस आई से ऐड कराता जाऊंगा। मैं ये आपको हिंट दे रहा हूं, मैं एक वेरिएबल लूंगा, इंटीजर लूंगा, और उसमें इस आई की वैल्यू ऐड कराता जाऊंगा। सपोज इफ मैंने इंट लिया, इंट से ए इक्वल टू 0, और मैं क्या करूंगा, उस ए इंटीजर में, अगर मैं उसमें पेंट में बोलूं कि मैं एक लॉजिक सोच रहा हूं, मैं क्या लॉजिक सोच रहा हूं, मेरे पास यस सर। 1 से 10 नंबर तक आ गए। नाउ मेरे पास एक इंटीजर वेरिएबल है, वो है ए, ए इक्वल टू 0। नाउ 0 है ये, क्योंकि मुझे तो 100 नंबर तक ऐड करने हैं, और जो मेरे पास ये 100 नंबर पड़े हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, जो भी पूरे एंड तक यस पड़े हैं, जितने भी पड़े हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, मुझे ये नंबर एक एक करके ऐड करने हैं। क्या से, पहले ये नंबर ऐड हो, फिर ये नंबर ऐड हो, सर। फिर ये नंबर ऐड हो, फिर ये नंबर ऐड हो। अब ये तरीका ऐड कैसे करना है ये आपने देखना है। डोंट गो फॉर ठीक गूगल, है। आई एम अगेन रिपीटिंग, जस्ट ट्राई टू यस सर। थिंक समवन। अगर तो लॉजिक अपने अंदर बिल्ड करना चाहते हो, यस सर। तो इस चीज को सोचो। मुझे पता है इसमें 5 मिनट लगे, 10 मिनट लगे, 15 मिनट लगे, आधा घंटा लगे, पौना घंटा लगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, पर दिमाग लगाओ। ठीक है सर।
ठीक है, दिमाग लगाओ, डोंट गो फॉर गूगल, आई एम अगेन रिपीटिंग नाउ। मैंने आपको एक हिंट दिया कि एक आपको वेरिएबल है और उसमें आपने सारे, आपके पास ये सारे वेरिएबल्स तो आ गए हैं, ठीक है बिल्कुल। ना। इधर आपको सारे वेरिएबल्स मिल रहे हैं एक रेंज में, 1 से लेके 100 तक। आपने क्या करना, उस बारी बारी उस इंटीजर में ऐड कराना है। कैसे ऐड कराना है ये आपने देखना है। ठीक है। ओके ओके, मैंने आपको हिंट दे दिया, आपने ऐड कराना है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, we will see, I will add one more file to my Python file and name it as fifth file. Okay. Now we are going to start with the topic first, local and global variable. Okay. Now what is, suppose if I declare one variable x equal to 50. Okay. Now first of all I will just give you the example. Yes. Say paint. Yeah. Now say there is a factory. This is a factory. Okay, I will say it is a factory. Okay, factory. So it has some rooms. Say 2 rooms. And this is, okay, I will say room 1, and this is room 2. Okay, now some of the persons are working in room number 1. Like say I will say A, say B, say C, say D. And the persons are working in the factory. Say X, Y, say Z, say E. Okay, now the rule is that these person X, Y, Z, and E, they can go anywhere, whether it this space or whether it is in this space or whether it is in this space. ये 4 जो पर्सन हैं जो फैक्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं, ये इस फैक्ट्री में कहीं पर भी जा सकते हैं, कहीं पर भी घूम सकते हैं, चाहे वो रूम 1 हो, चाहे वो रूम 2 हो। बट सर आपकी स्क्रीन जो पॉज ये हो गई रूम है पर्सन, तो। एक जस्ट अ मिनट, बट आई एम शेयरिंग माय स्क्रीन। जी सर, बस रूम वन ही दिख रहा है। जी। ओके, मैं दोबारा इसको करके दोबारा शेयर करता हूँ। ओके, नाउ कैन यू सी? नॉट विजिबल सर। अभी तक विजिबल नहीं हुई है आपको? नहीं सर, स्क्रीन ही जस्ट नहीं show हो रही। जस्ट अ मिनट, हाँ, अब विजिबल है सर, अब विजिबल। विजिबल हो गई। ओके, यस नाउ सर। दिस अगेन मैं रिपीटिंग, ये फैक्ट्री है, इसमें 2 रूम्स हैं, रूम 1 एंड रूम 2, एंड ये कुछ पर्सन है एक्स वाई जेड एंड ई, एंड दीज आर पर्सन ए बी सी डी। अब ये जो पर्सन है एक्स वाई जेड ई, ये फैक्ट्री के किसी भी कोने में जा सकते हैं क्योंकि बाहर काम कर रहे हैं, और ये रूम में भी जा सकते हैं, ये रूम में यस भी जा सर। सकते हैं, इस रूम में भी जा सकते हैं, इस रूम में जा सकते हैं। बट जो ये ए बी है जो रूम 1 में काम कर रहे हैं, ये सिर्फ यहीं रह सकते हैं, ये यहां भी नहीं जा सकते, और ये इस एरिया में भी नहीं जा सकते, किसी भी, ये सिर्फ यहीं काम कर सकते हैं। ओके, समझ गए मेरी बात आप, कि ए और बी चाहे सी और डी, ये सिर्फ देर पर्टिकुलर रूम में ही काम कर सकते हैं। ये सी डी वाले रूम 1 में नहीं जा सकते, ए बी वाले रूम 2 में नहीं जा सकते, और ए बी वाले ना बाहर जा सकते हैं इस रूम से, ना इधर घूम सकते हैं। पर ये जो एक्स वाई जेड ई है, ये कहीं पे भी घूम सकते हैं, चाहे ये फैक्ट्री का ये वाला एरिया हो, चाहे ये वाला एरिया हो, ये कहीं पे भी जा सकते हैं। समझ गए? समझ गए देव? यस सर, यस सर। सेम वे, ऑडिबल सर, और ठीक है। सेम वे मेरी क्लास की बात होती है। ओके, नाउ वहां पर
फैक्ट्री थी तो यहाँ पे क्लास थे, यहाँ वहां पर रूम 1 था, यहाँ पे फंक्शन 1 और फंक्शन 2 है। yes, sir. से फंक्शन 1 एंड फंक्शन 2। ओके, वहां पर अगर यहाँ पर मैंने बोला कि वहां पर ए भी काम करता है, यहाँ पर वेरिएबल ए है, यहाँ पर वेरिएबल बी है, यहाँ पर वेरिएबल सी है, यहाँ पर वेरिएबल डी है, और हेयर कुछ वेरिएबल्स है यहाँ पे, से वेरिएबल एक्स, वेरिएबल वाई एंड वेरिएबल जेड एंड सिमिलरली वेरिएबल ई। सो Okay, क्या है, ये जो वेरिएबल एक्स वाई जेड ई हैं, ये है ग्लोबल वेरिएबल, क्योंकि ये कहीं पर भी पूरे क्लास में घूम सकते हैं, क्लास में किसी के पास भी जा सकते हैं, चाहे वो फंक्शन 1 हो फंक्शन 2 हो, और दूसरी लैंग्वेज में कहूँ तो फंक्शन 2 इन दोनों को यूज भी कर सकते हैं, चारों को। और बट सी और डी जो हैं वो फंक्शन 1 में नहीं जा सकते, बिकॉज देयर वी कैन से उनका जो एरिया है जीने का वो सिर्फ यही है, इस फंक्शन के इनसाइड। ये फंक्शन के बाहर नहीं जा सकते, फंक्शन के बाहर ये इन मर जाएंगे। वैसे ही सेम ए एंड बी ये सिर्फ फंक्शन में जिंदा है, लेकिन जो एक्स वाई जेड ई है ये दोनों फंक्शन में यूज हो सकते हैं, चाहे वो इधर हो चाहे वो इधर हो। सो ए बी सी डी आर लोकल वेरिएबल्स, आई say here and say here, these are the local variable, and these x y z e, these are global variable. So understand the concept of local and global. yes, sir. Okay, now इसको अगर मैं अपनी फाइल में दिखाना चाहूँ, तो now how to make a function in Python, we use def. Yeah, Def, it says that it's a static of function. So and after that function name, local function. It can name can be anything. Okay, and it says print. I just say simple print well. Okay, if I say here, reformat the file. Okay, now if I run this, will it print well or not? it will local variable x. Yes, sir. It will be. Okay, so if I run it, nothing is there. Why? Because this function has to be called by something. Function cannot call itself. Understand? Function cannot call itself. It has to be called by something. So how to call the function? Just say function name. This is how you call the function in Python. If I just run this, now you see it will print well. Okay, now what will I do? I will say result equal to x into 2. Okay, and I will just say I want to print result. So if you see over here, what is x? X is a what is X x? X or global variable. global variable. Yes, sir. Okay, so I can access this x here. मैं इसको यहाँ पे Yes, use sir. कर सकता हूँ. Okay, now if I run this, now it will give me 100, 2 into 50. So this is how you can call the function. Okay, now say I say there is a variable a equal to 40, and I will say result is a into say 4. Okay, now if I call this local function, it will give me 160.
Okay, or what will I do? I will make this say function uh, here, and I will name it as local function one. Okay, and I will b to 40. Okay, now I cannot access a inside the another function because the you can say a का दायरा a की जिंदगी सिर्फ इसी फंक्शन के अंदर है, ये इसके बाहर जिंदा ही नहीं है. It is not livable outside this function, so it is giving me error that undefined, import this name unresolved reference. So the same way I have used here that a is in function 1 but I cannot use in function 2. The same way a is in function 1 local function and I am unable to use that same variable inside another function. Okay, so this make is clear that local variable is not accessible in another function. Understand? यस सर. सर Okay. जैसे हमने लोकल वेरिएबल के लिए फंक्शन कॉल करते हैं सर, हम्म अभी अभी जैसे हम इसमें कॉल कर रहे हैं, जैसे ए 40 करके हमने करा, लोकल फंक्शन को कॉल करा, तो नीचे हमने हम्म इसे कर दिया. हम्म. अब जैसे हम जैसे लोकल फंक्शन वन है, तो हम नीचे सेम ऐसे ही लिखेंगे लोकल फंक्शन वन और ब्रैकेट यस क्लोज और फिर हम वेरिएबल. यस यस, ये अगर आप देखो, suppose if I copy this and I will just be okay. Now if I do it here, now if I run this, now you see 160 because 4 into 4 160, or just I say 5, and if I run this 200, 5 into 40. So if the one thing, function cannot call by itself. Okay, now suppose this again, this is result variable, it is local variable, I cannot access it outside this function. If I सर. just say this I want to run, just suppose say I say print result, but it will give me error because result is local. Here it is local, here it is local. So I cannot access outside the function. The same thing I have told you that the local variable cannot access outside the function. Okay. So I cannot access result variable outside the function. Okay. So this is the thing about local variable. Now, if I declare something over here, suppose y equal to 90, x equal to 0, and y equal to 90. Okay. Now, this is a variable that is global. Okay, why it is global? That because it can be accessed by any of the function, whether it is local function, whether it is local function b. 1. If I say y, it will not give me any error. If I say x, it will not give me any error because these two are global variables. So it can be used anywhere in the class. This is my class, or you can say my file, and I can use this variable anywhere I want. Okay. ओके सर. Now suppose say I'm giving you one thing. Just try to do it now. Suppose if I want to print the result of local function 1, how can I do that? Without, but I don't want to call this function here. ओके सर. Yes. हाउ कैन वी कॉल. Mhm. I don't want to call it here directly.
Yes. Yeah, try it. ओके, लोकल फंक्शन यू वांट, सर जो लोकल फंक्शंस होते हैं, हम्म। मतलब उनको, सर एक बार क्वेश्चन रिपीट करो, मेरे थोड़ा आउट ऑफ चला गया दिमाग से, एक बार। मैंने जैसे मैं हूँ, मैं जैसे, इसको, या मैंने लोकल फंक्शन कॉल किया, अगर मैं इसको रन करता हूँ तो ये मुझे 160 दे रहा है, पर मैं क्या चाहता हूँ, ये फंक्शन भी कॉल हो, बट मैंने क्या कंडीशन डाल दी कि मैं इसको यहाँ पे कॉल नहीं करा सकता। सर पर लोकल फंक्शन वैसे कॉल नहीं होगा, उसको फंक्शन कुछ तो चाहिए था कॉल करने के लिए। कैसे हो सकता है? फंक्शन कैन नॉट बी कॉल्ड बाय इटसेल्फ। ये फंक्शन कैन नॉट बी कॉल्ड बाय इटसेल्फ, दैट्स अ थिंग दैट इट कैन नॉट बी कॉल्ड बाय इटसेल्फ, सो हाउ कैन आई डू दैट? हाँ सर, सपोज, अगर हम, हम्म, यस, बोलो बोलो। क्या लोग हो सकता है, हम्म मतलब अगर हम जैसे एक्स एक्स है सर, एक्स तो वो पर हमारा ग्लोबल वेरिएबल है, तो हम्म। सर ये कॉल कैसे होगा, नहीं सर कोई आइडिया नहीं है। थोड़ा सा सोचो, थोड़ा सा। मैं कॉल, आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, सपोज मुझे भी नहीं पता, अच्छा आई वांट टू, सपोज अगर मेरे को तुक्का मारना है, आप भी तुक्का मारो, कोई बात नहीं। क्या एक लोकल फंक्शन दूसरे लोकल फंक्शन को कॉल करा सकता है? एक लोकल फंक्शन दूसरे लोकल फंक्शन को हम्म। करवा सकते हैं सर, मेरे ओके, को, नाउ अगर मैं इसको यस अब सर, रन करूं, ये रन होगा, सब वो उस ओके, फंक्शन के अंदर कॉल करवाया, यस सर। यस, सो मुझे इससे सेकंड क्या पता चला, फर्स्ट पॉइंट क्या पता चला मुझे, फंक्शन कैन नॉट बी कॉल बाय इटसेल्फ, ओके, और सेकंड पॉइंट क्या पता चला, फंक्शन कैन कॉल अनदर फंक्शन। ओके, सो मुझे फंक्शन के रिगार्डिंग दो चीजें पता चली, कि फंक्शन कैन नॉट बी कॉल बाय इटसेल्फ, वो खुद को कॉल नहीं करवा सकता, बट फंक्शन कैन कॉल अनदर फंक्शन, दिस इज अ ट्रिकी पार्ट, इट हैज बीन आस्क्ड many times in the interview. If you're going for the fresher, they can ask you this thing. Suppose you have two functions, and if I want to call one function, so how can you call the second function? You just have to answer that you can call one function by another function. Okay. Now, mm, the more you want to ask something now, or should I move forward? मूव फॉरवर्ड Okay. So this thing is clear to you. हमने अभी सर। लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल और फंक्शन को कैसे कॉल कराते हैं, और फंक्शन कैसे दूसरा फंक्शन को कॉल कर सकता है, ये हमने देखा। ठीक है, अब अगले आगे चलते हैं, देयर इज अ टॉपिक नोन एज, यू कैन से, डेट टाइम। सो सपोज इफ आई अगेन add my python file, say sixth file, okay, now there is a thing, when I say from, in Python we import the classes by using the word keyword. Now say there is a class or package known as datetime, import datetime. Okay, so this is how we import the datetime. Now how it is useful, we'll say current
date equal to date time dot now. Okay, say print current date. Sorry, sorry. Hmm, sorry. Now, if I run this, now you see it will give me time. First, it is a simple variable. Okay, now if I want to look that what is the type of this, now can you tell me what is the type of current date? When I type, say, current date, so can you tell me that what is the type of current date? Oh, Type when we do the thing like type of this, and when I run this, it is giving me type that class float, class com, string, class class, integer. So what is the type of this current date? complex, If I run this, it is a time of date time dot date time. state time, date time. Because what I have done, this is a simple character, but I have given it as a date time dot now. So it is automatically converted into date time. Okay. Now from this, I can use suppose there is a formatted date, current date. Now this thing is strf time, and there is a format. I say percentage %b. Then I have percentage D, and then I have percentage Y. Okay, and I will say print formatted date. Okay, now if I run this, now you see June 10, 2025. So this is how you can format your date. Now, if I go again with the print type of formatted date, now what will be the type now? Date time, Okay, just let's run date, this. Just run this and see what it is. Now you see it is giving me a string. Why? Because I have changed this current date to strf string, time. strf time. That's why it has been changed to string. Okay. Now suppose you have a date like date equal to say today's or say 11 say 06 then 2025. Okay. Now say string formatted date. Now there is a thing known as date time dot strp time Uh, format. I am changing the format. You will see what I want to do and say percentage d percentage m then percentage y. Okay, and if I say print string formatted date, okay, now if I run this again, now you see. Now can you tell me what is this type of this print? If I want to go for the type of this string formatted date, so what is type now? इसी पूछती है जैसे हम टाइप बताते हैं सर जैसे फर्स्ट हमने करी डेट टाइम और Mm-hmm. अभी नेक्स्ट में हमारी आई स्ट्रिंग के लिए हमने एस टी आर में यूज करा
हम्म। अब अब ये ऐसे में होता है कि हम दो क्लासेस को कंबाइन करके लेवल बताते हैं, जैसे ऐसा कुछ नहीं नहीं नहीं, हम कर क्या रहे हैं, ये बेसिकली व्हाट इज द टाइप, इट्स अ स्ट्रिंग फॉर्मेट। स्ट्रिंग फॉर्मेट। यस सर, ओके, यस। मैंने क्या किया, एक वेरिएबल लिया, मैंने उसको क्या किया, डेट टाइम। व्हाट इज दिस डेट टाइम, इट्स अ क्लास। और इसके अंदर एक फंक्शन आता है एस टी आर पी टाइम। और उसमें क्या है, मैंने अपनी डेट पास की, व्हाट इज दिस डेट जो मैं पास कर रहा हूँ, और उसको मैं क्या फॉर्मेट देना चाहता हूँ, ये वाला, जिसमें पहले आता है this time, like here what type of date it is, first it is date, this is date, then this is month and year, फिर so मैं इसको ये बता रहा हूँ कि जो मैं डेट भेज रहा हूँ वो किस फॉर्मेट में आ रही है। मैं इसको चेंज नहीं कर सकता, अगर मैं चेंज करूंगा ना, समझ लो मैंने इसको यहाँ पर एम कर दिया और इसको मैंने डेट कर दिया, ना इसका मतलब है कि भाई ये मंथ है और ये डेट है। ओके, नाउ if I run this, so it has taken differently. Now it says 611. So you will get the difference when you use it. So you have to be very careful when you use these types of formatting. जो आप भेज रहे हो वो आप बता रहे हो कि भाई मैं इस फॉर्मेट में भेज रहा हूँ, आप आगे पीछे नहीं कर सकते। अब ऐसे यहाँ पर आप वाई लगा दो और यहाँ पे डी लगा दो। ओके, नाउ इफ आई रन दिस, नाउ यू सी इट विल गिव यू एरर, क्योंकि इतना इतना बड़ा मंथ, सॉरी ईयर, डेट इतनी बड़ी हो ही नहीं सकती, क्योंकि डेट में मैं 2025 भेज रहा हूँ। तो इतनी बड़ी डेट तो कभी हो नहीं सकती, डेट मैक्सिमम कितनी 31 हो सकती है। 31 हो सकती है। तो ये मुझे एरर देगा। तो मैं इसमें क्या बता रहा हूँ उसको कि भाई जो मैं भेज रहा हूँ डेट का, उसका फॉर्मेट क्या है। इफ यू सी दैट दिट इज रिटन ओवर हियर, फॉर्मेट, जो भी मैं उसको डेट भेज रहा हूँ उसमें उसका फॉर्मेट क्या है, समझ गए। पहला मेरा मंथ है, पहला मेरी डेट है, दूसरा मेरा मंथ है, और तीसरा मेरा ईयर है। सेम वे, डेट, मंथ, हाँ। ईयर। मैं उसको सिर्फ बता रहा हूँ कि मैं किस फॉर्मेट में भेज रहा हूँ तुम्हारे पास। ओके, और इसको मैं रन करूँ, नाउ यू सी, लास्ट थिंग इज डेट टाइम, दिस इज अ डेट टाइम। ये सिर्फ स्ट्रिंग में थी, अगर मैं यहाँ पे देखूं इसमें एंड टाइप, इसको मैं रन करूं, नाउ यू सी इट इज स्ट्रिंग। स्ट्रिंग। ओके, सो मैंने स्ट्रिंग को क्या किया, डेट टाइम में कन्वर्ट कर दिया, और उसको बताया भी कि भी मैं किस फॉर्मेट में तेरे पास स्ट्रिंग भेज रहा हूँ। ओके, नाउ इस डेट टाइम से मैं क्या क्या निकाल सकता हूँ, सपोज मैं निकाल सकता हूँ ईयर से स्ट्रिंग फॉर्मेटेड डेट डॉट ईयर। ओके, एंड आई विल से प्रिंट ईयर। मैं इससे डे भी निकाल सकता हूँ, डे इक्वल टू स्ट्रिंग फॉर्मेटेड डेट डॉट डे, क्योंकि मैंने उसको फॉर्मेट भेज दिया है तो उसको पता चल गया कि कौन सा क्या है, ये डे है, ये मंथ है, ईयर है। तो ये मुझे अपने आप उस चीज को फॉर्मेट करके दे देगा, प्रिंट ईयर देन प्रिंट डे। ओके, एंड द सेम थिंग आई कैन गो विद द मंथ एज वेल। ओके, नाउ मैं इसमें एक और चीज करता हूँ ना, इट विल गिव मी सिंपल से रन के 2025 11। Now June is there. What I will do, I will say month equal to string formatted date dot month, and I will just say print month. Okay. Now if I run this, it will give me simple 6. Or 6। what can I do? String formatted date dot strf time and say
percentage B. Okay, now if I run this, you see it will give me June. So I can change my formatted date, which is in the date time format, to anything. I can convert this to anything. Understand? यस सर। Okay. तो मैं आपको ये सिर्फ इसलिए इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि हमने क्या किया, एक सिंपल स्ट्रिंग को डेट टाइम में कन्वर्ट कर दिया और उसको मैंने बताया कि मैं किस फॉर्मेट में भेज रहा हूँ। उसने उसमें से फिर मुझे ईयर, डे और मंथ निकाल के दे दिया और मैं उस ईयर, डे, मंथ को भी फॉर्मेट कर सकता हूँ। अब मैं सिंपल बोलूंगा तब ये मुझे 6 दे रहा था, कि मुझे मंथ सिंपल 6 दे रहा था, लेकिन जैसे इसको मैंने फॉर्मेट चेंज किया, इसने मुझे ये दे दिया। ओके, सो आई कैन चेंज द फॉर्मेट ऑफ डेट एज वेल। ओके, we have done this. Hmm, okay. Okay, now I have show you that how to call the function. Now suppose in this file, I'm not going to make new file. What I will do, I will make some function, say def someone. Okay, and it says num1 equal to 50, num2 equal to 60, and result equal to num1 plus num2. Okay. Now So, we have already studied that. Suppose if I want to print the result, say print, say output is okay, and say plus result. Okay. Now it is giving me error. Why? सर वो स्ट्रिंग वगैरह कुछ अटैच जैसे खाली जैसे हम कल कर रहे थे Hmm. रिजल्ट में स्ट्रिंग लगा के रिजल्ट एक या नंबर है। यस, क्योंकि ये इंटीजर रिजल्ट दे ये रहा है सर तो मैं इंटीजर इस मतलब तो मैं इसको डायरेक्टली यूज नहीं कर सकता। आई हैव टू कन्वर्ट इट वो स्ट्रिंग to string. So now if I want to call this function, just simply write someone someone com research and run this. So output. output it is 110. Okay. Yes sir। So say, and I can do one more thing. Say, mm, yeah, I will make one more function, name it as sum2. And what will I do? I will pass two variables as num1 and num2, and Yes again result equal to num1 plus num2, and again just say I will print the same thing. Okay, now when I call this sum2, say sum2, okay, now it will ask me to pass the numbers because I have passed the arguments num1 and sir। num2. So I have to pass the arguments here as well. Suppose say 20, comma 40. Okay. Now if I run this, second is 60 because it will add 40 plus 20. Okay. So this is the function where we pass the values. Okay. Now there is one more thing.
say def sum3 here. I say num1. I say is known as input. Say enter num1. Say num2 equal to input enter num2. Okay, and again say result equal to num1 plus num2. Okay, and again I will say the same thing, that output. Okay, now say if I call this function, will it run or not? So it will run and ask for manual entry. Okay, let's do it. If I just suppose if I run this, now enter number 1, I Yes. will say 30, enter number 2, 50. Okay, Steve, now why it is giving me 3050? This is the question. 3050. Enter What it in has done, it has attached the two numbers. two numbers. Yes, yes. Okay, why? Because it has taken integers num1 and num2 as string. String. Okay, so what I have to do, I have to convert this to integer. Okay, now if I run this, say 30, 50, now you see output is 80. So you have to be very careful when you're working with these things. Yes. Okay, now there is one more function. Say I will make one more function. Say def sum4, and I will do the same thing here. But what I will do, return result. Okay, now suppose if I call this function say sum4, so and now if I run this, this is for some 4 function because I have called only that function. Say 70, then 50. Now what will happen? What will it give me? But, uh, Hmm? addition for 120. Okay, okay. If I press enter, now you see it doesn't give me anything because I am returning the result. I'm not, you can say, I'm not here printing anything. No, this can be done by two ways. Either I can write it like this print, Okay. okay, and if I say run this, say 40, then say again 60. Okay, now you see it is printing the result. Okay, or what can I do? I say A equal to uh, say sum 4. Okay, it will run or not? What do you think? Equal to sum 4. Because I have here
returning the result. It is returning the result. So I can store this in something. Yes, Let's try. Let's try. Suppose if I just say I will just comment this one and do this one, run this. Okay, say 40, then 70. It will not return you something because you have the value of A, but you haven't print anything. If I say print A, okay, again and say run, say 50, say 40, you see. So you have to be street smart. Now I'm getting the value A. If you see that the data type of A is integer because it is returning integer. Okay. So same will be returned by you. Okay. Say now suppose there is one more file. This is a sixth file. No, this is a fifth file. Okay, now say in my sixth file, or I will include one more file, say Python file, and say but I'll name it as from. I'll just name it as seventh file. Okay, now what will I do from the functions are in my fifth file? Yeah, from fifth file import someone. Okay, now I can call this function here. Now if I run it from here, now you see it will ask me to num1. Now why it is giving me now here I have called it. I will just comment this one. Okay, say someone. Okay, now seventh file. Now you see output is 100 and I have called another function file, another file function in another. How can I call it? I just use the word from the file name and import the function name. Okay, so suppose if I want to add one more function, say some sum 3 or sum 4, I can use it like I can import as many functions as I want. Okay, and I can use the same function here. three. Okay, so I can import as many functions as I want. Another Okay, five. या मैंने एक फंक्शन दूसरी फाइल का फंक्शन अपने दूसरे फाइल में बना दिया. ओके, तो जो अभी तक मैंने आपको करवाया है इसमें कुछ भी पूछना चाहोगे? हम्म एक सेकेंड सर, मैं देख लूँ सर। हम्म इसका यस, ये फिफ्थ फाइल में मैंने फंक्शंस बनाए. हाउ टू मेक फंक्शन. सो हमने ये भी देखा कि वो क्या होते हैं, सर मतलब एक डेट. चीज पूछती थी मैंने इसमें। हम्म सर जैसे हम कल कर रहे थे सर, हम्म तो हमने जैसे हमने जब हम कॉल करते हैं ना, अ, जैसे हम सर प्रिंट करवाते हैं सर, स्ट्रिंग हम्म करते हैं ना सर, तो जैसे हमने हम्म स्ट्रिंग दिया हुआ है ए प्लस बी कह रहा है। हम्म अ, ये पूछ रहे हो? सॉरी सर, ये पीछे नहीं नहीं सर, मैं पूछता हूँ।
सर जैसे हाँ हमने जैसे आउटपुट में दिया हुआ है स्ट्रिंग रिजल्ट करके सर। अभी सर जैसे हमने जहाँ पे अभी num1 num2 करा है, जैसे इंट हमने डिफाइन करा है जिसको ये स्ट्रिंग दे रहा था, तो सर मतलब ये था कि जैसे हमने नीचे स्ट्रिंग बता तो दिया उसके रिजल्ट में, तो ये ऊपर नंबर को जैसे इंटीजर में हमने जैसे डिफाइन करा है सर। कहाँ पे डिफाइन किया? यहाँ पे? जैसे सर यहाँ जो जैसे num1 है सर, जैसे हमने इंटीजर वैल्यू दी है। अगर जैसे sum3 वाला है ना सर, अभी हम जैसे यहाँ पे सपोज num1 की जगह ए और बी होता है। num1 here yes sir a a and num2 की जगह बी हम लेते थे। तो अभी भी हमको इसको इंटीजर डिफाइन करना पड़ता है सर। जैसे बिल्कुल हमने करना जो पड़ेगा जो जो ये। जो जो नीचे स्ट्रिंग है सर, उसका क्या बनता है फिर तो, जो प्रिंट में हम बताते हैं सर, ये वो वाला अवतार पूछ रहे? यस सर यस देखो सर ना, यस सर देखो अभी क्या है, मैंने आपको एक चीज कल बताई थी, एल एच एस यस इक्वल सर टू आर एच एस, लेफ्ट हैंड साइड यस इक्वल सर टू राइट हैंड साइड। इसमें ये क्या यस है, सर ए और बी को जब मैं इनपुट बोलता हूँ ना, तो इसको स्ट्रिंग में लेता है। मैं कुछ भी इसको करूंगा तो इसको वो जोड़ देगा। जोड़ देते समझ लो मैंने इसको लिखा 100 और 50, ये लिखेगा 10050। नाउ सपोज इफ देर इज नो समथिंग लाइक दिस, या okay, now if I say sum3, okay, I will call sum3, okay, and I will run this. It says enter number 1 because I am writing here. If I say enter A, then enter B, it will write the same thing which I will write it over here. Say run. Okay, sorry, I have to here A B, then run. So you see, it will type that thing that I will type here. Okay, now I will say A, I will say 45. B, I will say 5. Now, in my opinion, it should be 45 plus 5, it should be 50. But what it will take, it will take A and B as 455 string. 455. Yes, if I just press enter, now you see 455, because it has not, it has taken both of them as a string. So what I have to do, first I have to convert them to integer individually. Okay. Then I will add it. Now, if I just run this again, now 45, now this 5, now it will add because I have converted them to integers. Okay, so when I take the input, then input is taken as a string. Now, if you want to see, just say print type of A, and the same thing, you will print the type of B. Okay, now if I run this, A 45, now you see class string, and again 5, again string. So they will don't act as a string. That's why I have to convert it to integer so that A can be added with B. Not I don't want to join them. I want to add them. So I have to convert it both because they both act as a string. When I take a input, then they both act as a string. That's why I have to convert it over here in integer. And again, the result which is there, it is in the integer form because these two are the integers. So it will be in the integer. Again, I have to convert back it to string. Getting point? लास्ट पॉइंट हमने फिर इसको दोबारा स्ट्रिंग में करा, इंटीजर इंटीजर बिल्कुल को। बिल्कुल, क्योंकि अब इसकी वैल्यू क्या है, अच्छा अब मैं इसको अच्छा यहाँ, अगर मैं इसको यहाँ पे प्रिंट करवाऊं, प्रिंट टाइप
of result. Okay, now if I run this again say 50, ये string होगा. Again I say 10, again ये string होगा. Now you see class integer, because जब इसने इसको प्रिंट किया रिजल्ट में, तो टाइप जो इसने, तब इसने इसको इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया था. That's why I have to convert it back again to string, because result इससे पहले इंटीजर बन चुका था. और पहली क्लास में बताया था कि स्ट्रिंग स्ट्रिंग के साथ ही ऐड हो सकता है, इंटीजर के साथ ऐड नहीं हो सकता. जैसे हम सी शार्प में करते थे तो वहां पर हो जाता था, लेकिन यहाँ पे नहीं हो सकता. अगर उसका टाइप डिफरेंट है तो वो आपको एरर देगा और बोलेगा इसकी टाइप को चेंज करो. चाहे यहाँ पर टाइप बूलियन होती, चाहे यहाँ पर टाइप आपका फ्लोट होता, जो डेसिमल वैल्यूज होती हैं, तो जैसा मर्जी टाइप होता, उसने उसको उस हिसाब से ही लेना था. ठीक है. पाइथन की ये सबसे बड़ी बात, पाइथन की सबसे बड़ी बात है, वो अलग अलग डाटा टाइप्स को ऐड नहीं करने देता. वो कहता है अगर इसका डाटा टाइप सेम होगा तो ही वो ऐड करेगा. क्योंकि हमने, अगर आपको याद हो, हमने ये ऐड किए थे. मैं चाहूं तो मैं सेम सेम से कर सकता हूं, लेकिन अगर मैं इसको दूसरे से करूंगा ना, ये मुझे एरर दे देगा. क्यों? वो डाटा टाइप डिफरेंट हो जाता है. ये देखा आपने, यहाँ पर कन्वर्ट किया मैंने, तभी उसने मुझे उसको करने दिया. यहाँ पर उसने मुझे प्रिंट करने दिया, अदरवाइज वो मुझे वहां पर प्रिंट नहीं करने देता. Okay, so you have to be very careful when you are working with the data types of Python. Python says you can't add two different data types. Okay, so anything you want to ask me right now? कुछ भी अगर पूछना हो तो. क्या मैं फास्ट तो नहीं जा रहा ना? नहीं नहीं सर. ओके सर, जो जैसे हमारा डेट का था सर, इसमें सर एक तो हमने करा था STRF टाइम और STRP टाइम. यस सर, ये जो दो है. यस सर, इनका डिफरेंस ये रहता है कि एक को हम मतलब डेट को हम उस फॉर्मेट में बताते हैं कि ये जो तो मैं बताओगे सर, मतलब STRF और STRP. मैंने इसको बोला, देखो फर्स्ट ये ना एक फॉर्मेट है. जैसे मैंने कहा करंट डेट. करंट डेट क्या है? डेट टाइम डॉट नाउ. जब मैंने इसको प्रिंट किया तो हमारे पास क्या आया इसका, ये फर्स्ट आई, इसने मुझे डेट भी दिया जो मेरे को यहाँ पर है, और इसका टाइप देखा तो ये डेट टाइम में कन्वर्ट हो गया था. मतलब इसका टाइप क्या हो गया? डेट टाइम हो गया. मैं यहाँ पे सुनो, मैं यहाँ पे अब मैंने क्या लिया, फॉर्मेट लिया. पहले क्या आ रहा है इसमें? BDY. मैंने इसको बोला कि मुझे इस फॉर्मेट में वापस दे दे. नाउ सपोज इफ आई चेंज विद Y and say it with B. Okay, now just remember this, what we have here. Control C and say, पहले मेरे को S मिला था कि यहाँ पर डेट आई. हम ट्राई मारते हैं. अगेन इसने सेम फॉर्मेट में दिया. कि इट्स फॉर्मेट कि हम इसको चाहें तो ना चेंज कर सकते हैं. कई बार ये चेंज करता है, कई बार नहीं करता, पर मोस्ट ऑफ टाइम इसी फॉर्मेट में रखते हैं हम इसको. मोस्टली तो फॉर्मेट यही होता है. जहाँ तक मुझे याद है, BD, आई थिंक सो दिस शुड बी M. ओके, नाउ इफ आई इसने चेंज नहीं किया, तो ये जो STRF टाइम है ना, ये थोड़ा सा अलग है. पर या इट्स अ जस्ट अ थिंग, या ये हमको फॉर्मेट डेट देता है. ये सिंगल क्या, ये कहाँ पर था? ये कुछ नहीं था. इसने करंट डेट की वैल्यू ले ली, वैल्यू के साथ ये आपको टाइम भी देगा, मिनट भी देगा, सेकंड भी देगा, और मिली सेकंड भी देता है. पर ये क्या कर रहा है, सुन, मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, ये क्या थी? ये एक स्ट्रिंग थी. मैंने यहाँ पर दिखाया स्ट्रिंग थी. ठीक है, स्ट्रिंग थी. मैंने क्या किया, इसको एक और फॉर्मेट में चेंज कर दिया. वो भी क्या सेम रही. से हेयर प्रिंट फॉर्मेटेड डेट,
देन उसका टाइम डेट टाइम. नाउ अगेन just a minute, print formative date here. Now this is the print type date, where it is printing. Now if I just comment this one and run this, it is giving me, okay, this is the thing, that's why I'm confusing. ये भी है, मैं तभी कंफ्यूज हो गया, मैं क्या कर क्यों नहीं रहा. नाउ हम पहले पे जाते हैं. करंट डेट क्या है? डेट टाइम डॉट नाउ करंट डेट. इसने जब मैंने करंट प्रिंट करवाया, इसने ये प्रिंट किया, उसका टाइप प्रिंट किया ये. ओके, मैं इसको पहले फॉर्मेट कर देता हूँ इसको. नाउ मैंने सेकंड क्या किया, इफ यू सी June 10, 2025 प्रिंट फॉर्मेटेड डेट. नाउ ये करंट डेट से इसने निकाला. करंट डेट क्या है? ये वाली चीज, ये वाली चीज. ओके, इसने इसमें से इसको निकाला ये. नाउ मैंने पहले बताया था, इसको मैं y कर दूं और इसको मैं b कर दूं. ओके, नाउ इफ आई रन दिस अगेन, नाउ यू सी, पहले ईयर आ गया, ईयर आ गया, फिर मंथ आ गया, मंथ आ, डेट आ सॉरी गई, डेट आ गई, डेट आ गया, देन मंथ आ गया. अगर मैं इसको दोबारा चेंज करता हूँ तो दोबारा मुझे उसी चीज में दे देगा. मंथ मंथ पहले कर दिया, मंथ नेम, और ईयर बाद में कर दिया. तो व्हाट, जिस फॉर्मेट में मैं चाहूंगा ना, उस फॉर्मेट में मैं डेट ले सकता हूँ. और मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मेरे पास एक डॉट डेट यहाँ है तो, अलग। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर तो मैं डेट टाइम डॉट नाउ, इसके बाद ये अपने आप ही इसको डेट टाइम में मेरे पास यहाँ पर क्या है, एक स्ट्रिंग में डेट पड़ी है. इफ यू सी, यहाँ पर मेरे पास स्ट्रिंग में पड़ी है, क्योंकि अगर पहले 4 प्रिंट स्टेटमेंट के बाद मैं देखूं, 1 2 3 4, व्हाट इज द टाइप हियर, it's a say 1 2, या इट्स अ टाइप ऑफ स्ट्रिंग. सो मैंने क्या किया, उसको बोला कि मैं भाई तेरे को इस डेट टाइम में कन्वर्ट करना चाहता हूँ सिंपल स्ट्रिंग को, और किस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, और किस फॉर्मेट में भेज रहा हूँ, डे, मंथ, मंथ, ईयर, ईयर। कि मैं इस फॉर्मेट में तेरे अंदर इस चीज को भेज रहा हूँ, उसको कन्वर्ट कर. नाउ जब मैंने उसको प्रिंट किया, प्रिंट स्ट्रिंग फॉर्मेटेड, उसने उसको ऐसे कन्वर्ट कर दिया. और क्या टाइप दे दिया उसको, डेट टाइम डॉट डेट टाइम. उसने स्ट्रिंग को डेट टाइम में कन्वर्ट कर दिया. आई कैन पास एज मैनी स्ट्रिंग एज आई वांट, और वो अपने आप ही उस स्ट्रिंग को डेट टाइम में कन्वर्ट कर देगा. क्योंकि अगर मैं चाहूं तो इस स्ट्रिंग में से ईयर नहीं निकाल सकता ना. अगर मुझे स्ट्रिंग में से ईयर निकालना है तो मैं कैसे निकाल सकता हूँ? कोई तरीका है स्ट्रिंग में से ईयर निकालने का? कोई तरीका नहीं है स्ट्रिंग में से ईयर निकालने का. तो मैंने क्या कहा उसको, कि मैंने कहा भाई, मैं तेरे को स्ट्रिंग भेज रहा हूँ जो डेट है, और वो किस फॉर्मेट में है, इस फॉर्मेट में है, इसको कन्वर्ट कर दे डेट टाइम में. जैसे उसने उसको कन्वर्ट किया, मैं उसमें से ईयर भी निकाल सकता हूँ, डे भी निकाल सकता हूँ, मंथ भी निकाल सकता हूँ अपने फॉर्मेट के हिसाब से. गेटिंग माई पॉइंट? यस सर। तो आज के लिए मैं यहीं पर रोकता हूँ, क्योंकि हमने थोड़ा ज्यादा फास्ट किया है, और आपने कल वाला काम भी नहीं किया है. यस सर, यस सर। ठीक है ना, तो मैं इसको यहाँ पे रोक रहा हूँ. ओके, तो देव, दोनों दिन का काम करो. कुछ प्रॉब्लम आती है यस मुझसे सर। व्हाट्सएप पे बात कर लो, पूछ लो, मैं बता दूंगा. ठीक, ठीक।